Continuing the same, children, we are discussing about irregularities of a surface. You can observe that the surfaces are not very smooth, like plywood, or I was telling you about the road. These surfaces are not very smooth. Okay, so there are irregularities you can consider like this: the surface having some this type of nature. You can see this is known as irregularities. And irregularities of the surface, get interlocked. जैसे आपका क्या है कि ये आपका जो सरफेस है जिस पे ऑब्जेक्ट ने मूव करना है, एंड दिस इज द सब ऑब्जेक्ट विच हैव टू मूव ऑन दैट सरफेस. दिस इज द surface, this is the surface, and this is the object which have to move. When these two things come into contact, these irregularities got interlocked. You understand? जैसे आपका ऐसे irregularities इसमें है और इसकी irregularity यहाँ आ गई, इसकी यहाँ आ गई, तो ये क्या हो जाते हैं आपस में एक बॉन्ड से. ये these means it's not that much easy to separate it. ठीक है, क्योंकि जैसे ये इसके अंदर स्टक हो गया है ना, तो इसको रिमूव करना इज नॉट दैट मच इजी, राइट. सो दिस इज नोन एज इंटरलॉकिंग. इसको क्या बोलते हैं? इंटरलॉक बोलते हैं. ठीक है, इंटरलॉकिंग बोलते हैं. तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज आर शोन हियर इन द बुक ऑल्सो. यू कैन सी दिस इज द इरेगुलरिटी ऑफ द सर्फेस एंड अपर वन इरेगुलरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड. ठीक है, जैसे आपका टेबल टॉप है उसमें भी इरेगुलरिटी होंगी. बुक दो इट इज नॉट हैविंग मच इरेगुलरिटीज, बट स्टिल देयर आर इरेगुलरिटीज. ठीक है, irregularities होगी जरूर, थोड़ी कम होगी बट होगी. ठीक है, friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear to be very smooth have a large number of minute irregularities, what I was telling you. ठीक है, कम होंगी बट होंगी जरूर. ठीक है, वो कह रहा है इवन द सर्फेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, जो हमें क्या लगती हैं, बहुत स्मूथ लगती हैं, दोज ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन दैम. इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस लॉक इनटू वन अनदर. ये क्या होती हैं? एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती हैं. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. First of all, we have to break this interlocking. That is why in the previous activity, that brick one, it was taking more effort from bringing the brick from position of rest into motion, because initially we have to break this interlocking. Once these interlocking is broken, it comparatively takes less effort, because now we just have to continue the motion and there is not enough time for this object and the surface to again get interlocked, because the force applied by us is making it move. ठीक है, but gradually what happens when we are not continually applying the force, what happens gradually, again these because of the force of friction, the speed gets reduced and then ultimately it comes into rest. ठीक है, तो कह रहा है when we attempt to move any surface, we have to apply force to overcome interlocking. सबसे पहले हमें force लगाना पड़ता है interlocking को overcome करने के लिए, उसे break करने के लिए. On rough surfaces there are large number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. ठीक है, जैसे आप अगर यही एक्टिविटी आप एक पेंसिल सेल यहाँ पे रोल कर रहे हो, आप टेबल टॉप पे कर रहे हो, तो इट विल कवर अ कंपैरेटिवली मोर डिस्टेंस. इफ यू आर dragging this book or you are rolling a ball into on a comparatively rough surface, it will cover less distance, because there is friction is more for a rough surface, right? I hope this much is clear to you. Now we see that the friction is caused by interlocking of irregularities in two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. ऑब्वियसली अगर आपका जो प्रेस्ड हार्डर मीन्स हैवी वेट, मैंने आपको ये बताया था कि वेट पे भी काम डिपेंड करता है. इट्स मोर डिफिकल्ट टू मूव अ हैवियर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे कह रहा है वी सी दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सर्फेस आर प्रेस्ड हार्डर. प्रेस्ड हार्डर मीन्स इफ देयर इज अ हैवियर ऑब्जेक्ट टू बी pushed or pulled. You can experience it by dragging a mat which when nobody is sitting on it. ठीक है, and when a person is sitting on it. आप घर में खेलते भी हो ना, if a child is sitting on a mat, if you're pulling it or if you're pulling it, or it comparatively takes more effort if
the mat is empty, nobody is sitting on it, it takes less efforts because of weight of that object, ठीक है, of or that child, weight of that child. You have to push the you have to push on the book to keep it moving. Once you have broken the interlocking, जब आप एक बार इसको रेस्ट से मोशन में ले आए, आप छोड़ देते हैं तो ये फिर रुक जाता है. If you want the box to continue the motion, you have to continually apply force on it, ठीक है. तो वो आपका कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है. और जो पहले आपने लगाया था फॉर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. तो आपका कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर, ठीक है. Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now. ठीक है, अगर आपने ऐसा करके नहीं देखा है तो करके देखो. कह रहा है what is easier to move the box from rest or to move it when it is already in motion. Now it has come to the same point that which one is easier to bring it from motion to the rest or to continue the motion. Obviously it will be more easy to continue the motion. The force required to overcome friction at the instant object start moving from rest is a measure of static friction. On the other hand, ये मैंने आपको already बता दिया है, so I am not explaining it again. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. When the box starts sliding, the contact point on the surface do not get enough time. दिस ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू, क्योंकि अब जो है आपके जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो क्या करें, लॉक इन टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फ्लोर. The irregularities of the object do not have enough time to get interlocked with the irregularities of the surface on which it is moving. So the sliding friction is comparatively less than the static friction, and you find it somewhat easier to move the object or which is already in motion than to get started. ठीक है. Now friction and necessary evil we will study later, but what you have to do, you have to read it yourself first. ठीक है.